Friends, have you seen lightning in the sky while taking off our synthetic clothes? Have you heard a crackle? Like so many examples, only one factor has played an important role, and that factor is electric charge. And today's topic is electric field and charges. So my dear students, myself Pratibim Pandey, and I will start class 12 physics. First chapter is electric field and charges. In this chapter we will study about charges, nature of the charges, fundamental or basic properties of the charges, what is charges, what is charging by induction, some examples related to this, and this is my first lecture, and in this lecture I will discuss very basic things. So now focus, what is charges? What is charge? तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है इसको, 10th में भी आपने देखा है इसको, चार्ज क्या है। तो चार्ज सिंपली चार्ज इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम and one this q is denoted by charge and q is I into t. Unit of charge is coulomb. 1 coulomb is, if 1 ampere of current flows in conductor for 1 second, then we can say the charge is of 1 coulomb in that conductor. So first, what is charge? Friends, when we rub our hands, after some times we feel warm. Why? Because some electrons move from one hand to another hand, means there is charge. When we rub plastic pen with our dry hairs, that plastic pen are able to catch small bits of paper. You can see here, like this. So we can say that charge is the basic property by which friction between two insulating bodies produces
फ्रिक्शन बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडीज, अगर दो इंसुलेटिंग बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन रखते हैं तो उनके बीच चार्ज डेवलप हो जाएगा। दूसरा डिफिनेशन हम कर सकते हैं कि चार्ज इज फिजिकल फेनोमेना by which electrical force is produced, is developed in matter. When we rub a glass rod with silk, so one type of, when we rub glass rod with silk, after rubbing, glass rod has acquired one type of charge and silk cloth acquired another type of charge. And after rubbing two glass rods with silk cloth, this means when we rub two glass rod with silk cloths, then both glass rod acquires same type of charge, and when we brought close together both rods, they repel with each other. This shows कि same type, same nature, repel means there is repulsion between same type of charges, and there is attraction between other type of charges. This means there are two types of charges. Two types of charges. Positive charge means deficit of electrons. अगर if we rub our hand, अगर हम अपने दोनों हाथ को एक दूसरे पे रगड़ते हैं तो एक हाथ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे हाथ में जाता है. तो सपोज दिस हैंड इज A and this hand is B, और A से कुछ इलेक्ट्रॉन B में जाता है तो A में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हुई. तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that gives positive charge and excess of electrons gives negative charge. And in this example, if both glass rod acquire same nature of charge, they repel with each other. This means we can say then that like charges repel each other, and unlike charges attract each other. Like this, when we rub glass rod with silk cloths, and after rubbing, you will know
glass rod as one type of charge, and another and silk cloth another type of charge. After rubbing, if we touch that charge rod with silk cloth, then that charge is disappear. That charge is disappear. This means here one instrument is there to detect the charge, and that is the name gold leaf electroscope. Gold leaf electroscope is an instrument by which we can detect the presence of charge and amount of charge. Detect presence of charge and amount of charge. Amount of charge. Like this, there is a metallic rod and rod and this is a metallic rod this is knob, metallic knob, and this is simple gold leaf electroscope. Simple gold leaf electroscope. When we brought close a charge rod to this metallic knob, when we touch it, this rod, suppose this is charge, positive charge, to this metallic knob, so these charges goes through this metallic knob, and this is gold leaf. This is gold leaf, and when these positive charges goes to this leaf, the leaf diverges. Suppose this is the angle theta. This is the angle theta. So angle theta is degree of divergence. Degree of divergence. When large amount of charge goes through this metallic knob, then the theta
increases, and with increase in theta, that theta gives amount of charge. We can say degree of divergence indicate amount of charge. Amount of charge. अगर चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा इस गोल्ड लीफ को मिलेगा, तो उतना थीटा उसी रेशियो में बढ़ेगा। इस तरह से ये हो गया आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। Now basic properties of electric charging. So there are three basic properties. First one is additivity. Additivity of charges. Second one is conservation of charges. Third one is quantization of charge. Additivity of charges. तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई सिस्टम है, कोई बॉडी है, उसमें so many individual charges आते हैं, then net charge of that system is the algebraic sum of all individual charges. So first we will discuss additivity of charges. A system or body has so many individual charges at different points. Then total charge of the system is equal to algebraic sum of all individual charges. Like suppose a system having so many charges, like this is Q1, this is Q2, this is Q3, this is Q2, Q5, Q6 up to Q9.
so many individual charges like Q1, Q2, Q3 up to Qn. Then net charge of this system, suppose Q, this Q means net charge of the system. Is algebraic sum of all individual charges Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn. So like mass, charge has magnitude, but charge has like mass, charge has magnitude, no direction, but mass is always positive, but charge can be positive or negative. Mass always positive, but charge can be positive or नेगेटिव. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज अ सिस्टम है 5 चार्जेस. अ सिस्टम है having a system has 5 charges plus 1 coulomb plus 2 coulomb plus 3 coulomb minus 4 coulomb and minus 5 coulomb and minus 5 coulomb. So what is the charge of that system? Q को पूछ रहा है क्या होगा. What is Q? How we can solve? Q is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. अब साइन के साथ इसको ऐड करेंगे क्योंकि अलजेब्रिक सम इसको करना है. तो +1 +2 +3 plus -4 and -5. So these are positive numbers. So 1, 2, 3, and these both are negative number. This is minus is common. 4 and 5. 1 and 2, 3 and 3, 6. 4 and 5, 9. 6 minus 9 is minus 3 coulomb. This means charge of a system can be negative or positive. इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम का चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास ऑलवेज पॉजिटिव. मास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा. Now next property is conservation of charge. Conservation of charges. This means charge is conserved. Means we can't create charge or can't destroy the charge. Means charge of a system is always constant.
means we cannot create the charge, we cannot destroy the charge. सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक सिस्टम ए और दूसरा सिस्टम बी, ए का चार्ज है QA और बी का चार्ज है QB. when there is friction between A and B, when we rub both system A and B, then there is transfer of electrons from A to B or B to A. यहाँ मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स A से B को कुछ इलेक्ट्रॉन सपोज 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बिफोर रबिंग total charge of a system is QA plus QB, and after rubbing charge of a system is A से जब 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे QA माइनस 10, और B को जब 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका चार्ज हो जाएगा QA प्लस 10E. तो QA माइनस 10E प्लस QB plus 10E, and this 10E and this minus 10E is cancel out. Now QA plus QB. Here we can say in both situations total charge of the system is constant. That one is QA plus QB. This means charge of a system is always constant, that is conserved. Third one is quantization of charge. According to quantization of charge, charge of a system is equal to integral multiple of charge of an electron. This means we can say charge of a system is integral multiple of charge of an electron. Q equal to Na, where N is plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, कुछ भी plus minus 4, dot 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 so on. मतलब कि किसी सिस्टम का नेट चार्ज means electron, proton and neutron, these are the elementary particles. तो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, मतलब किसी सिस्टम में 10, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000 इस तरह से हम बोल सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका नंबर काउंटेबल नंबर होगा. ये नहीं बोल सकते कि चार्ज किसी सिस्टम का चार्ज 1000.5 इलेक्ट्रॉन
पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। Q is Ne, दिस इज अ फार्मूला। और इस फार्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसी तरह से प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 1.6 10 टू द पावर -19। सेम मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन नेचर यहाँ पॉजिटिव होगा। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल 2e, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन इज how many electrons in 1 coulomb of charge। Try करिए, I'm giving 20 seconds। How many electrons in 1 coulomb of charge। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और यहाँ पर Q और E की वैल्यू, Q की वैल्यू दी हुई है, E की वैल्यू मालूम है, तो हम N की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, सिंस वी नो Q इज N into E, therefore N is Q by E and Q is 1 coulomb and charge of electron नेचर नेगेटिव है, तो यहाँ कैलकुलेशन में नेचर का कोई रूल नहीं है। 1.6 10 टू द पावर -19 ये नंबर हुआ। 1.6 इस पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 10/16, और ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। अब ये 10 है, ये 16 है, इससे एक 10 ले लो, जिससे आसानी से हम डिवाइड कर लें और बच गया 10 टू द पावर 18, क्योंकि एक 10 इसने इस 10 को ले लिया। 10 into 10 100। नाउ वी कैन डिवाइड 16 से डायरेक्ट 16 6 जा 96 होता है और 4 16 2 जा 32 8 65 है, 6.25 into 10 to the power 18। इसका मतलब 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस चार्जिंग की बात करते हैं, इसके पहले एक टॉपिक और पढ़ना है, हमको पढ़ना था इंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्शन। इंडक्शन, व्हाट इज इंडक्शन? Induction is the phenomena when a
uncharged body, it is the phenomena when an uncharged body brought very close to charged charged body, then the charge then the charges are accumulated in uncharged body, or we can say that uncharged body is electrically charged. We can say that uncharged body is electrically charged. अगर कोई अनचार्ज बॉडी के पास कोई चार्ज बॉडी लेके आते हैं, टच नहीं कराना है. When a charged body is very close to uncharged body, then in uncharged body some charges are accumulated in front of that charged body. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Suppose two metallic spheres A and B. This is insulating stand. This sphere is A and this sphere is B. After then, when a charged body, this is first situation, second situation, when a charged body is very close to uncharged body like this. When charged rod is very close to uncharged body, then when charged body is very close to uncharged body, so many electrons are, you will know, this is metallic spheres. So many electrons are there. So some electrons are attracted towards this charged body, and some electrons are repelled by these electrons. Then equilibrium is reached. Then second situation, suppose next situation,
charges are accumulated because this is which nature? This is positive nature. This rod is positive, therefore electrons are accumulated here, and at rear surface of this second spherical body B, these are the positive charges. This is stand like this. ये कैसे होता है? इस पूरे स्फेरिकल बॉडी में, मेटेलिक स्फेरिकल बॉडी में so many electrons are there, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिला करके जीरो, उसका नेट चार्ज नहीं कुछ. लेकिन when charge body is very close to this sphere, मेटेलिक स्फीयर A, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो गए, एक्यूमुलेट कर गए, और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनों से रिपेल हुए, और देयरफॉर इक्विलिब्रियम is reached, and after then when this small gap between these both spheres, so because of attraction, this negative charges and positive charges means A and B. Here you can see negative charge is placed here and positive charge is placed here at B, and in both there is force of attraction. When slowly the gap is increased, then charge is equally distributed. Like this negative charge is redistributed through whole spherical body, and this positive charge also redistributed through whole spherical body. तो इस कॉन्सेप्ट में, इसमें इंडक्शन में हम यही देखते हैं कि बिना टच कराए ही कंडक्शन में हम बॉडी को टच कराते हैं, और कंडक्शन इन इंडक्शन it is without actually physical contact, without any physical contact, when a charged body and uncharged body is very close to each other, then uncharged body is also electrified, means it is electrically charged. This phenomena is known as induction, charging by induction. चार्ज को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो बाय फ्रिक्शन, बाय फिजिकल कांटेक्ट चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस इंडक्शन में विदाउट कांटेक्ट the charges are accumulated. यहाँ पे accumulated word आएगा. The charges are accumulated in front of the charge bodies. Now, one example. आप अर्थिंग या ग्राउंडिंग की बात करते हो, तो अर्थिंग क्या होती है कि when means a charge body is
close when charge bodies contact with or then excess charge are transferred to or this process is known as grounding or earथिंग. इसमें आप कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, इसको भी पढ़ते हैं. कंडक्टर आपको मालूम है कि विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी in easy way, that one is conductor. Insulator which cannot allow to pass electricity through them, that one is insulator. कंडक्टर में क्या एग्जांपल है, तो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एटसेट्रा, सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास न कराए, जैसे कि प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप जानते हैं. हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है, if 10 to the power 9 electrons moved out of a body to another body every second, if 10 to the power 9 electrons moves from a body to another body every second, हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. हाउ मच टाइम is required to get a charge of 1 coulomb. मतलब 1 कूलम चार्ज होने तक कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले हमको ये जानना होगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज. तो ऑलरेडी वी हैव डन इन प्रीवियस एग्जांपल कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Q is Ne, then N is Q by E, और Q की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1.16 to the power minus 19. इस तरह से आया था 6.25 into the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सेकेंड. तो इसका मतलब कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना टाइम चाहिए. इन since 10 to the power 9 electrons transfer from A to B in 1 second, therefore 1 electron 1 by 10 to the power 9, and therefore this much 6.25 10 to the power 18. This is 6.25 into 10 to the power 18 by 10 to the power 9, and this means 9. So this is 6.25 into 10 to the power 9 second. So time is 6.25 10 to the power 9 second. We can convert it into years also. 6.25 10 to the power 9 और 1 ईयर में कितना 365 डेज 25
24 hours, and in 1 hour 60 minute, and in 1 minute 60 सेकेंड. तो इस तरह से नियर अबाउट 198 ईयर्स आंसर आएगा. दिस मीन्स 1 कूलम is a very large quantity. This quantity is very large.